Hello बच्चों, let us do this question here. The question says that which of the following functions are odd or even or neither here. Okay, so this is a question we have here. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए the key concept that we are going to apply here is, so इधर देखो, अगर if f of minus x is equals to f of x, okay, समझ लो ये है, then what we can tell here, then the given function is what here, given function is even here. Okay, यही बोल सकते हैं. अगर समझ लो f of minus x is equals to minus f of x, then इस केस में क्या बोल सकते हैं, then the given function is what here, then the given function is odd here. Okay, मतलब इधर हम क्या कर रहे हैं, x की जगह में माइनस x लगाने के बाद अगर हमको सेम फंक्शन आए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा. अगर माइनस ऑफ f of x आए तो जो भी फंक्शन लिया है वो ऑड फंक्शन हो जाएगा. Okay, so this is a key concept that we are applying here. So now moving forward to the solution part here. The given function here is f of x is equals to sin x plus cos x here. So to check the given function, to check the given function is odd or even, we need to replace x with minus x here. So when we do that, our function becomes what here, f of minus x here. So that means what here, sin of minus x plus cos of minus x here. Cos of minus x. So इधर देखो, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए द प्रॉपर्टी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी आर अप्लाइंग हियर, वो क्या है बोले तो cos ऑफ माइनस थीटा है, समझ लो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा. एंड वैसा ही sin ऑफ माइनस थीटा होगा, समझ लो, एंड इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा. तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो हमारा f ऑफ माइनस एक्स जो है, इट बिकम्स व्हाट हियर, माइनस साइन एक्स. ओके, cos ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा. मतलब इधर से क्या आ रहा है हमको, cos x minus sin x, which is not equal to f of x here clearly, right? So समझ लो मैंने इधर से अब even if I take it is not equal to f of x, that is clear. Okay, so let us check whether it is equal to minus f of x or not. If I take minus common from this, what I will get here, for suppose if I will get sin x as a positive plus, I will get minus here, minus cos x. Okay, so here you can clearly see it is not even equal to minus of f of x. Okay, the given function f of minus x, it is neither equal to f of x nor it is equal to minus f of x. So इधर से क्या बोल सकते हैं, therefore the given function f of x is neither odd nor even here. Okay, so this is the final answer for the given question here. I hope this understood you well. Thank you so much. All the best.